मास्टर सब लिया, लेकिन बहुत सारे क्लासेस में ऐसा रहता है कि सिर्फ बेसिक ही पढ़ा दे और बेसिक के बाद सेपरेटली हमें एडवांस कोर्स करना पड़ता है। और ये इतने कम फी में आपने बेसिक टू एडवांस सब कुछ कवर कर दिया। और कल तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ क्या नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग के थोड़े से कॉन्सेप्ट नाम से याद है, आई डोंट नो देम एक्चुअली, but after end of this class I feel that this is really a perfect class for a person who is very immature in this market, who doesn't know anything. I'll suggest everybody, whoever sees my feedback, please do join them, learn this, and if you practice his if you practice his guidance or his advices, it will definitely going to help you in future. Thank you. Start from the basic, where because this kind of subject should start from the basic. You should build your basic, so that I think you captured very well. And also the technical, like Siddharth mentioned, charts where there are multiple technical indices we have, but definitely we need to learn what are the major patterns or the indices we have that you taught us, and which I think would help us to minimize the risk and to take better options or opportunities in the stock markets. And I think this everyone should learn before to enter the stock market. So more to learn then. मैं जिसू से आया हूँ। मैंने पहली क्लास किया था, आपसे 3 गुना ज्यादा पैसा दिया उसको मैंने, लेकिन आपसे आधा भी नहीं उसने सिखाया। ऊपर की बातें सिर्फ सिखाई और छोड़ दिया। तो मेरे को वो अच्छा लगा आपसे सीख के भी, और सब डाउट भी क्लियर हो गए। और स्विंग ट्रेडिंग के मैं अभी इंटरेस्टेड हो चुका। मैं तो इंटरडे ऑप्शन में देखता था, लेकिन अभी मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। जो पैसा बनाते हैं वो स्विंग को प्रेफर करते हैं।